After the big tariff announcement, something happened that shocked economists, and it wasn't the stock market dropping. It was the value of the dollar dropping. That was a sign that something was getting different and that people weren't just shifting between U.S. assets. They were getting nervous about U.S. assets. We have just seen the biggest one-day move on the Nikkei 225 since 1987. A single summertime decision by Japan's central bank ended up triggering a panic. Was the three-year boom just a blip rather than the start of a new era? India's finance minister says it's the weak growth that's a blip. Alright, I have a quick question. अगर इंडिया की इकोनॉमी इतना ही अच्छा कर रही है तो फिर PFC, REC जैसे स्टॉक्स अभी भी 40% डिस्काउंट पे क्यों मिल रहे हैं? ये तो DII फेवरेट्स थे, राइट? एंड अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक भी उतना ही अच्छा है तो फिर RBI इतने एक्सट्रीम मेजर्स क्यों ले रहा है, इतने रिस्की मेजर्स क्यों ले रहा है? Hi, I'm Tarun Tukania, and today I'm going to prove through 6 charts that the bullish sentiment you see around this market is built on false hope. You know the philosophy here at Tabd. मैं जो भी डेटा आपके साथ शेयर करूंगा उससे आप भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो. If you can't, drop a comment. I will send you the link. With that said, let's start with the biggest and the boldest of all claims. कि इंडिया का जो ये ग्रोथ स्पर्ट है एंड ये जो सेक्युलर बुल रन रहा है पिछले 5 सालों का, that's never really going to stop, not for the next 5-10 years at least. That is a lie. See, India में जो ये bull run हमने देखा after COVID, that happened for one main reason, China plus one. Geopolitical situation, especially between China and US, it is a great opportunity for us. If China loses, India gains. There's no other country that has the infrastructure that we have and the manpower that we have. That's our biggest asset. And we're hoping to cash in on that. 2014 से हमारे पास मोदी गवर्नमेंट थी. They did a phenomenal job with so many policies. But जिस रेट पे हमने 2021 से ग्रो किया, that only happened because इंडिया को चाइना का बहुत बड़ा मार्केट मिला था. Now the issue is China is making a comeback. And as China takes back control, India will lose some of its share. So we will see growth slow down. And अगर हमारे दिमाग में ये डाउट है that China grow कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए I'll share a chart which is the investment that China has made into African nations. And for the first time since 2016, this investment has grown and grown significantly. अब दुनिया की जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं. And that is the reason कि हम एक consistent FIS selling देख रहे हैं हमारे देश में. And the only reason we've survived is because our DIIs have managed to buy into the market क्योंकि हमारे retail investors अपने SIPs and mutual funds को रोक नहीं रहे हैं. But there's going to come a time जब ये छोटे investors भी suffer कर रहे होंगे and they'll have to sell out. And I think that time is almost here. And to prove that, I have a second chart. जब भी इस chart की value below 0 जाती है, historically for the past 150 years, हर बार हमने एक recession देखा है. अब problem क्या है, इस chart को देखते तो बहुत सारे लोग हैं, but इस chart को समझने का तरीका गलत है. कई लोगों को लगता है that whenever we see this chart go below 0, we should assume recession आ ही गया. That's not how it works. Recession इस negative value के कुछ 1-1.5 साल के बाद आता है. In fact, recession actually तब आता है जब ये chart दोबारा positive हो जाए and significantly positive हो जाए. Because वो दिखाता है कि market as a whole अब सोच नहीं रहा recession आएगा. And that's when we get surprised, right? जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिसेशंस को, the stock market keeps saying नहीं. The moment we say no, the economy is recession proof, that's when the stock market is like boom, here we go. ये ट्रिगर इसी साल अप्रैल में क्लिक हुआ. And if you think about it, जितनी प्रॉब्लम्स अभी दुनिया में चल रही हैं, why would this trigger fail this time of all times? It has held true for 150 years and अभी भी we can see that at least दुनिया में half a dozen issues हैं जो हमारे लिए recessions create कर सकती हैं. So why would this trigger not work this time? Now an understandable question here is, ये जो half a dozen problems की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हम already जानते हैं, right? And the stock market is known to digest these kinds of information very quickly. So maybe that has already been priced in. No, that is not how recessions or big crashes work. हाँ, छोटी corrections में यही होता है.
Russia Ukraine का war हुआ, the market digested it within a couple of weeks and we only went higher from there. But the way recessions work is that दो अलग segments बन जाते हैं investors के. एक वो segment होता है जो छोटे scale पे काम करता है, so they can quickly sell, quickly buy back. And उनके लिए हाँ, mid-April में there's a short-term bottom made. But there is a section of investors that work with thousands of crores in investment. And उस सेक्शन के लिए इतनी जल्दी अपनी इक्विटी का मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं होता. सो वो क्या करेंगे? हाउ डू दे फाइनली लेट गो ऑफ ऑल दिस इक्विटी जब उन्हें दिख रहा है कि अगले 2-3 साल रिटर्न नहीं आएगा या फिर एटलीस्ट एक 30% 40% डाउन साइड है आगे. सो फॉर देम टू सेल एक फॉलिंग मार्केट डज नॉट वर्क. उनके बेचने के लिए द मार्केट नीड्स टू बी राइजिंग, देयर नीड्स टू बी डिमांड फॉर स्टॉक्स. सो डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट होती है. बट दिस लीड्स टू अ वेरी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन. What if even these big traders are wrong? What if these 3 charts are wrong and the market keeps on rising? हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, and this is the very fair question to ask. But वहाँ पर I have a third chart to show you, which is the institutional holding of money in cash equivalents. मतलब वो पैसा जो banks and बड़े investment institutions equities में या bonds में नहीं डाल रहे हैं, वो पैसा जो वो liquid assets में रख रहे हैं, which could be very short-term bonds as well. बट बेसिकली वो किसी भी रिस्की इंस्ट्रूमेंट पे नहीं डाल रहे थे. दे कीपिंग द मनी असाइड. एंड हिस्टोरिकली ये जब भी हुआ है, वी हैव सीन मैसिव करेक्शंस इन द मार्केट. एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज एज द RBI और द सेंट्रल बैंक इज पंपिंग मनी इनटू द सिस्टम, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना पैसा साइड में रख रहे हैं. सो नेचुरली नो मैटर व्हाट सेंट्रल बैंक्स डू, वी कांट अवॉइड अ रिसेशन. And for the most optimistic among us, अगर आपको अभी भी लगता है that India का bull run is well and truly running, हमारी infrastructure, हमारा defense, हमारी manufacturing, consumption, सब कुछ बढ़ते ही रहेगा, just look at market favorite stocks एक बार. Look at your trends, look at your RECs, PFCs, look at your PSU banks. जब RBI ने इतनी liquidity pump कर दी, CRR cut कर दिया, rates cut कर दिए, government इतनी defense को orders दे रही है, इतनी infrastructure में orders दे रही है, all of this is happening. फिर भी ये stocks all time high भी नहीं पहुंच पा रहे, barring 1 or 2 exceptions. ये distribution है where the biggest people have to sell off their stocks, and in order to do that, they have to convince you and me that market में सब अच्छा है. उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा हमें कि अरे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतनी अच्छी कंपनी है कि बस आप खरीद ही लो शेयर. वो ये नहीं देखने देंगे हमें कि वो 40 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है एंड उसकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन इतनी वीक है कि वो दुनिया का बेस्ट रेडार सिस्टम भी अगर क्रिएट कर ले, आकाशतीर जैसा सिस्टम भी अगर क्रिएट कर ले, अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है बिल्ड करने की, तो वो प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट्स के बिना मल्टीपल्स नहीं मिलते. आई एम अ पेट्रियट, आई एम प्राउड ऑफ द वे आवर डिफेंस इज वर्किंग, बट लुक एट HAL का ऑर्डर बुक, लुक एट द लैग, राइट? हमारे एयर चीफ ने भी कई बार उनको कॉल आउट किया है that they're not delivering products. Now you could very rightly ask me what will cause this fall. अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, राइट? नहीं, because इंडिया का कंजम्पशन is still falling and that is bound to happen because हमारा कंजम्पशन बढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज एंड सर्विसेज इंक्रीज की वजह से. That happened one because of China plus one and second because the US was growing very fast. The Western world was growing very fast. But now that the Western world is seeing a contraction and China is taking back manufacturing, हमारे जो 2 prongs थे जिसके ऊपर Indian youth consumption बढ़ा रहा था, they're gone. So ये consumption आएगा कहाँ से? And let's not forget the last time we had tariffs in the world, Smoot-Hawley tariffs at the time of President Hoover, that led to a 66% reduction in global trade. Imagine अगर आज ऐसा होता है तो हमारी IT companies का क्या होगा? They are completely reliant on the US for business or the rest of the Western world for business. And हमारे population के upper middle class का सबसे बड़ा chunk इसी sector पे rely करता है. That means our consumption basically goes plop. So अगर आपसे कोई भी कहता है कि US की tariffs का India पे impact बहुत बड़ा नहीं होगा, तो 2 ही possibilities हैं. या तो उन्हें पता नहीं है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या वो आपसे झूठ बोल रहे हैं. In either case, that might not be the right person to take advice from. I'm not either because I'm not a registered advisor, but at least I'm coming out here and telling you the truth as I see it with things that I can prove. Now, if you think I'm wrong, try looking up this one thing called bond vigilantes, right? You'll see that there is much more going on behind the scenes than most media outlets would let us know. When you combine all that is happening, a 21,000 Nifty is a very conservative estimate. But if you think I'm wrong, please tell me in the comments why do you believe that the world or India will keep growing at such a fast pace? And don't tell me that we have
wonderful people working, hardworking people, and everything else because I'm a patriot, right? I believe that our country is not the greatest in the world, sure. But I also believe in being a realist. And abhi jo aage dikh raha hai, that is not a very bright picture.